नमस्कार। सायरन के फर्स्ट एवर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सायरन यानी कि स्मॉल इन्वेस्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन एक इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने के लिए बनाई गई संस्था है। लेकिन हमारे इन्वेस्टर्स के लिए ये जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्रेड एंड बटर। लेकिन इस जो 12 जून को दुर्घटना हुई है उसने हमारे इन्वेस्टर परिवारों के ब्रेड विनर को ही उनसे छीन लिया है। तो इसका एक बहुत ही बड़ा मानवीय एंगल आ जाता है और इस पे चर्चा करने के लिए हमने सायरन के ही सदस्य ग्रुप कैप्टन परमजीत जी आहलूवालिया जी को बुलाया। थैंक यू। परमजीत जी आहलूवालिया एयरफोर्स से रिटायर्ड बहुत ही सीनियर पदाधिकारी हैं। Group Captain Paramjeet Singh Ahluwalia brings over 4 decades of professional and instructional excellence in civil and military aviation, a stalwart in pilot training and air operations. He had held key positions in both the Indian Air Force and Air India, contributing significantly to aviation safety, instruction, design and simulator-based training. और सबसे ज्ञातव्य बात है कि ये जो पायलट जो फ्लाइट को उड़ा रहे थे उनको भी कहीं ना कहीं इन्होंने एयर इंडिया के अपने कार्यकाल के दौरान ट्रेनिंग दी थी। तो हम इस दुर्घटना के मानवीय और टेक्निकल पहलुओं को छूते हुए ग्रुप कैप्टन परमजीत सिंह से बात करें। परमजीत जी, पहला सवाल आपसे यही है कि आपके जहन में सबसे पहला विचार क्या आया जब ये दुर्घटना आपने देखी? नमस्कार। एंड जो आपने क्वेश्चन किया कि जो सबसे पहला जो ख्याल आया कि इसके अंदर कोई बचने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मैं जब ऑन किया अपना टेलीविज़न, हम अहमदाबाद से कई बार टेक ऑफ लैंड किए हैं एंड वो एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां आगरा के बाद इट इज़ बर्ड इन्फेस्टेड, बहुत ज़्यादा बर्ड हैजर्ड है। और जैसे वो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा था, दिखाया जो वीडियो पहली आई इमीडिएटली, वो जो 30 सेकंड्स के लिए जब एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया एंड उसके बाद मेरे ख्याल 4 के 500 फीट के ऊपर वो जब नीचे जा रहा था, तो ये सबसे पहली चीज़ मेरे ये दिमाग में आई कि इसके अंदर कोई बचने की उम्मीद नहीं किसी की भी, क्योंकि वो पूरा पॉपुलेटेड एरिया है। इमीडिएटली आफ्टर द पेरीफेरी अहमदाबाद एयरपोर्ट के, मतलब कि कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे, जैसे हडसन का आपको पता है एक्सीडेंट जो हुआ था, तो सब सर्वाइव कर गए। क्यों सर्वाइव कर गए कि दोनों इंजन शट हो गए थे उसमें भी, एंड बट एयरक्राफ्ट जो था वो अपना उसके ऊपर हडसन रिवर के ऊपर स्मूथली उन्होंने लैंड करा दिया। और सब लोग, आपने सबने मूवी भी देखी होगी, पर अगर इसके अंदर वो संभावना नहीं थी। ये मेरा सबसे पहला मेरे विचार जो आया कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बैड एक्सीडेंट। सर, हडसन रिवर में जो हुआ था दैट वाज अ केस ऑफ बर्ड हिट। या अभी मैं अपने को तैयार करना था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने इसको क्लासिफाई किया किस तरह की रिस्क है। फर्स्ट इज बर्ड हिट, सेकंड इज ह्यूमन एरर, थर्ड इज मैकेनिकल फेलियर, फोर्थ इज फ्यूल एंड फिफ्थ इज यू कैन से सैबोटेज। नाउ बर्ड हिट का अपेरेंटली वो जो पिक्चर आया उसमें कोई चिड़िया उड़िया दिखी नहीं, एंड जो थोड़ा बहुत मैंने जानकारी हासिल की है, ये इंजन बड़े पावरफुल है और जिसका 53,000 पाउंड का एक का टोटल है। तो वो कहते हैं कि छोटी मोटी चिड़िया से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा अनटिल अनलेस चिड़ियों का एक झुंड आ जाए, जो कि इस केस में नहीं था। तो अब उसके बाद जो बाकी की संभावनाएं जो मैंने आपसे पूछी है उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें। बर्ड हिट का केस तो नहीं था। आप ये कह नहीं सकते कि बर्ड हिट का केस नहीं था, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली इस एयरक्राफ्ट की कैसे टेक ऑफ करता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि जो आपको कुछ आइडिया हो कि कैसे एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ करता है, ओके, उसको उसके इंजन चेक किए जाते हैं। फुल पावर दोनों इंजन के ऊपर, अगर फुल नहीं तो एटलीस्ट 80-90% पावर खोलकर सारे इंजन पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, बोथ
तो जब देखता है पायलट कि हाँ ये बोथ इंजन्स दे आर वर्किंग, फिर वो थ्रॉटल बैक करता है। एयरक्राफ्ट जो है वो ब्रेक पे बोलते हैं, वी कॉल इट ऑल्सो BRP, ब्रेक रिलीज पॉइंट। तो फिर वो दोबारा थ्रॉटल्स अपनी खोलता फुल। नाउ स्पीड्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए इसको, क्योंकि अगर आपके ऑडियंस को ये चीज़ समझ आएगी तो उसको ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं। एक स्पीड होती है V1, वी कॉल इट गो नो गो स्पीड। इस स्पीड के ऊपर पायलट को एक डिस्क्रिप्शन रह जाती है उस वक्त, गो नो गो। गो मतलब कि आप जहाज को टेक ऑफ कर दो, जहां उसको थ्रॉटल बैक करके विद इन जो लेंथ बची है रनवे की उसके अंदर स्टॉप हो जाएगा जहाज। बट अगर आपने V1 क्रॉस कर ली, देन एक और स्पीड जो हम बहुत ज्यादा डोमिनेंट है इन एविएशन, वी कॉल इट V2 स्पीड। ये स्पीड कहते हैं सेफ्टी स्पीड। ये स्पीड जो है 35 फीट पे जब जहाज आ जाता है वो स्पीड उसको अचीव करनी पड़ती है। ओके, और ये सब चीजें जो होती हैं हम V1 से V2 तक, वन इंजन विच वी कॉल क्रिटिकल इंजन, दोनों में से जो भी इंजन क्रिटिकल है उसको संभावना लेके कि वो बंद हुआ है और द एयरक्राफ्ट शुड बी एबल टू क्लाइंब टू 35 फीट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज जो कह रहे हैं आपकी बर्ड की संभावना नहीं है, वो V1 और V2 के बीच में अगर बर्ड स्ट्राइक की है तो पायलट ने अपना उसको कंट्रोल किया और उसके बाद टेक ऑफ किया। नाउ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे एविएशन के अंदर इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड है कि पायलट का रिएक्शन टाइम 2 सेकंड है। कोई भी चीज जब होती है, बाय द टाइम ही रिएक्ट्स इट टेक्स 2 सेकंड्स। नाउ इन दिस केस अगर बर्ड हिट हुई है और उसने रियलाइज किया है आफ्टर V1 एंड बिफोर V2, तो आपका मतलब है जो हम लोग को अपेरेंटली दिखता है कि कोई चिड़िया नहीं है तो बर्ड हिट नहीं हुई थी, वो सोचना गलत है। बर्ड हिट बिटवीन V1 एंड V2 के बीच में देखो सर, आप जो वीडियो आई है वो बहुत पुअर क्वालिटी की वीडियो है, आप उसके अंदर ये भी नहीं जज कर सकते। बट मैं आपको ये चीज एग्री करता हूं कि 138 के अराउंड दोपहर के इतनी ज्यादा गर्मी है अहमदाबाद के अंदर, और इसके अंदर जो ऐसे जहाज हैं, इवन इफ दे आर पावरफुल, ये फुली लोडेड जाता है जहाज, एंड इसके अंदर फुली लोडेड मतलब पैसेंजर वाइज एंड फुल फ्यूल, बिकॉज इट हैज टू फ्लाई सो मेनी आवर्स। तो इसका ये मतलब है इन अ लेमैन कि जहाज ने बहुत ज्यादा रनवे को खा जाना है बिफोर ही टेक्स ऑफ। तो दैट्स व्हाई ही इज ईटन अप द रनवे। कोई रनवे के जो डायमेंशंस बचे हैं बहुत कम है उसके अंदर कि उसको इमरजेंसी में नीचे डाल के कुछ ना कुछ करे, बट वो नहीं चांसेस इसके अंदर। तो मैं इस पॉइंट को आपको फिर स्ट्रेस करूंगा। एक इंडिको का पायलट, आज की टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि उसने थर्ड सुनी है। ओके, कब थर्ड सुनी है? बिटवीन V1 एंड V2। और उसके बाद पायलट के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रह जाता बट टू टेक ऑफ। बहुत बड़ी बात का खुलासा कर रहे हैं आप। खुलासा टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज है। ओके, अभी 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 इसके आगे देखो क्या थर्ड है। थर्ड कैन बी बर्ड थर्ड, इट कैन बी सैबोटाज थर्ड, इट कैन बी समथिंग विच हैज एक्सप्लोडेड, समथिंग विच वी नाउ एनालिसिस विल बी डन। बट जो पॉइंट मैं आपको एनालाइज करके बताना चाहता हूं कि पायलट का पहला क्या रिएक्शन है जब ऐसे इंजन शट होता है। उसका पहला रिएक्शन है कि जो लाइव इंजन है उसके ऊपर पावर रिड्यूस करे, नहीं तो एयरक्राफ्ट स्विंग करेगा जिस साइड का इंजन गया है, क्योंकि ये लाइव है और डेड है तो ऐसे जाएगा। तो उसका पहला एम होता है टू थ्रॉटल बैक। नाउ आपको ये जरा देखना, विजुअलाइज अपने माइंड में करना पड़ेगा। देयर इज नो रनवे लेफ्ट। फ्लैप्स जो है आप जो 5 डिग्री है वो आप जो अगर दूर से देखें तो आपको पता नहीं लगेगा कि 5 डिग्री है। जब प्री फ्लाइट चेक करते हैं तो ध्यान से देखने से पता लगता है ये 5 डिग्री है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है देखना कि 5 डिग्री है। दूसरा अंडर कैरेज राउंड है। स्पीड जो है एक स्टॉलिंग स्पीड बोलते हैं। स्टॉलिंग स्पीड वो स्पीड है कि अगर जहाज उस स्पीड के नीचे आता है तो एयरक्राफ्ट विल नॉट बी कंट्रोलेबल। उसको कंट्रोल करने का बड़ा मुश्किल है। उसको उसके प्रोसीजर्स कहे जाते हैं व्हेन द पायलट्स आर इन द ट्रेनिंग स्टेज। और
अभी उस स्टेज पे अगर पायलट ने थ्रॉटल बैक किया और उस वक्त, क्योंकि रिएक्शन टाइम बहुत कम है, उसको मालूम है जहाज जो है सबसे को टच करते ही जाएगा, क्योंकि इंजन फेल हो चुका है, दूसरा इंजन को उसने स्लो करना पड़ेगा और थ्रस्ट ऑटोमेटिकली जाएगी। तो कहने का मतलब इट इज जनरली द टेक ऑफ लाइक दिस, बट इन दिस केस द टेक ऑफ विल बी नियरली टचिंग द मदर अर्थ। ओके, आम जनता के लिए थ्रॉटल बैक मतलब सर कि जैसे आप कोई भी चीज का पावर को पीछे लाते हो तो उसको हम बोलते हैं थ्रॉटल बैक। ओके, ये दो इंजन की थ्रॉटल अप, थ्रॉटल मींस द power which is in the hands of the pilot mechanically or electrically, whatever the systems which are being now, there are auto systems also, but I will just say throttle means the power is in the hands of the pilot to control, power को reduce करने, power reduce। तो इसका मतलब, बट इंपॉर्टेंट अगेन आज की जो न्यूज में मॉर्निंग में पढ़ रहा था, पायलट का लास्ट ट्रांसमिशन टू एयर ट्रैफिक कंट्रोल इज कि नो थ्रस्ट एयरक्राफ्ट फॉलिंग। इसका मतलब पॉजिटिवली with so much of experience of Sumit Sabharwal, he cannot make a mistake between an engine thud and then the aircraft is going under control and he is transmitting SOS. We call it Mayday, Mayday, Mayday 3 times. It means that the aircraft is threatened with grave and imminent danger and require immediate assistance. इसका ये भी मतलब है कि more or less save our souls, काम खत्म होने, मतलब लास्ट ट्रांसमिशन है कहीं किसी भी स्टेशन पे, इन एयर, ग्राउंड और एनीवेयर व्हेन SOS इज हर्ड, इट मींस इट्स मोर और लेस लाइक अ लास्ट ट्रांसमिशन। कोई बचा सकता तो बचा लो। ओके, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर ये पायलट ने ट्रांसमिशन दी है तो बर्ड स्ट्राइक का, ही वुड हैव जस्ट सेड पोर्ट इंजन बर्ड स्ट्राइक, जब कोई जो भी इंजन पे स्ट्राइक हुई है, he would have transmitted at least this line, there's no such thing as come. So I agree with you at last that bird strike has to be ruled out. Okay, in this case, ruled out. But what can be the other reasons? Now, again he's ruled out. You say he's a no. You see, if you analyze from the pilot point of view, there are, we call it PF, pilot flying, PNF, pilot not flying. It can be captain who is flying the aeroplane at that time or the first officer who is flying the aeroplane. So we are not discriminating between commander and first officer. We are saying जहाज उस वक्त किसके कंट्रोल के अंदर है, उसको हम बोलते हैं पायलट फ्लाइंग। नाउ इन दोनों के बीच में पायलट फ्लाइंग अगर कैप्टन था तो पायलट नॉट फ्लाइंग इज जनरली डूइंग ऑल द चेक्स। नाउ as the aircraft takes off, okay, rotate, we call it rotate, change the attitude of the aircraft, the first thing which is done is undercarriage up, because जो ड्रैग है, ड्रैग मतलब जैसे पुल करता है डाउनवर्ड्स, तो मैक्सिमम ड्रैग जो है वो अंडरकैरेज देता है। तो इमीडिएटली फर्स्ट थिंग आफ्टर टेक ऑफ वी इज सपोज्ड टू बी अंडरकैरेज अप। ओके, नाउ द फ्लैप्स जो है उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 5, 15 and 30. Generally, higher flaps are not used. Lower flaps are used because आपके पास फुल लोड है, फुल फ्यूल है एंड आप लिफ्ट ज़्यादा चाहते हो। अगर ज़्यादा लिफ्ट चाहते हो तो आपको फ्लैप लेने पड़ते हैं। तो उसने फ्लैप लिए 5 डिग्री अगर लिए तो। ओके, नाउ देर इज लॉट ऑफ डिस्कशन इन द मीडिया, सोशल मीडिया एंड अदर प्लेसेस कि पायलट ने जो भी नॉन फ्लाइंग था उसने जब अंडर कैरेज अप लेना था उसने फ्लैप्स अप लिए। जब आप फ्लैप्स अप लेते हो उस वक्त, तो उस वक्त भी थोड़ा सा एयरक्राफ्ट ड्रैग करता है और अंडर कैरेज पहले नीचे था। स्पीड जो है आपकी इट इज वेरी क्लोज टू स्टॉलिंग स्पीड। आपने थोड़ी सी एटीट्यूड चेंज किया, बैंक डाला, एयरक्राफ्ट आपका सिंक करना चले जाएगा नीचे। बट ये इतना पावरफुल इंजन्स हैं कि फर्स्टली इट गिव्स यू वार्निंग। आप जैसे अच्छी गाड़ियां चलाओ, जैसे फॉर एग्जांपल मर्सिडीज और many cars, it gives you warning. It gives you warning that you are not wearing your seat belt. Okay, your tire pressure is not
correct, okay, so and so thing, it has got total modern systems. You can't believe it. This aircraft, except takeoff, the pilot can leave the controls and land the aircraft at the other destination, and even not touch the control while landing. ये ऐसे जहाज हैं मॉडर्न जो जहाज है, that system we are talking about. So these systems are foolproof failures, and if there is a failure, there is an indication to the pilot, and not only indication, it also tells you what action should be done. So now whether we should rule it out that this mistake was done between the pilot and the co-pilot, okay, which is, I personally, from my viewpoint, it is not possible for such an experienced pilot to make such a mistake, okay, that the flap and the undercarriage has been mistaken, but that can be a major reason. Now the third reason which is going around is what we call it as contamination of the fuel. Now, मैंने कहीं पर पढ़ा भी कि he was giving an example कि अनिल अंबानी की हेलीकॉप्टर में कंटामिनेशन हुआ था, फ्यूल में रेती एंड कंकड़ पाए गए, तो वैसा कुछ हुआ हो, ऐसी संभावना है? देखो, कंटामिनेशन अगेन, जब भी कोई फ्यूल लोड करते हैं जहाज के अंदर, उसका जो सैंपल है उसी वक्त क्रॉस चेक होता है. द मेजर रीजन कैन बी अ मॉइस्चर कंटामिनेशन, जिसमें वाटर हैज because of lot of heat and during this time of the day, okay, something steams up and becomes water, and that can affect. The second part is that what you said, the last, a sabotage. Now, even if such sabotage is taking place, okay, it's again our viewpoints. Technically, the engineers have to corroborate this, what I am saying. There is a fuel in the pipeline and there is a fuel in the tank. Now, the engines, they consume a lot of fuel. It's not that they are high guzzlers, okay, of fuel. तो अगर किसी ने ऐसा कुछ काम किया है टैंक्स के अंदर, okay, then the aircraft has started up the engines, okay, the aircraft was on ground, air conditions were not working initially, then the air conditions ke liye complaint and all that things were done. That's quite normal. Many times the AC's air condition takes time to come up to the level in which the passengers want it or something like that. That's quite common in commercial airliners. So that what I'm trying to say is, even if the fuel which is consumed, okay, which was there in the pipeline, and that was not contaminated, and I personally feel that this thing should have happened much earlier. Okay. Pipeline में जो fuel होता है, that is not sufficient for even 1 minute or 2 minutes. No. I can't. You can't say that, because there are. You see, that's why I told you that how much is the fuel usable when it is in the pipeline. From the pilot point of view, we look at the totalizers. The totalizers are the one which tells you how much is the fuel which you have got, and generally the graph is in your mind that during takeoff is this much, climb is this, cruise is this, descent is this, landing is this. For an alternate airport, I require this much of fuel. For any contingency, I have this much of fuel. So that thing is playing in the mind of the pilot all the time. Okay, but in this case, that if it was the tanks were contaminated, or with anything what you can either sabotage or otherwise, okay, for the aircraft to run to a point where it is not recoverable, it is beyond my perception that how that can be done. Because at least I would say good about 15 to 20 minutes after the engines were on, because engines start करके उसके बाद permission from the air traffic control, then you are taxiing, then you are lining up, then you are checking the engine. वहाँ से start करते Yeah. engine on. So you that point we need to look at
not purely कि that take off पे जब आपने खोला. तो सर इसमें एक दूसरा एंगल आपके बोलने से मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा भी अगर सैबोटेज की थ्योरी को फर्दर एक्सपेंड किया जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि वल्व एक्चुअली फुल्ली बंद नहीं हुआ है, उसमें कुछ कंटेमिनेशन है जो फ्लो फ्यूल को धीमा कर देता है. ऐसा ऐसा भी हो सकता है, लाइक से कंक्रीट. I told you it's such a modern bloody aeroplane कि anything, even if the pilot intentionally does it, it doesn't let you go. हाँ, मैंने कहीं पर पढ़ा सर कि इवन इंजन में अगर आग भी लग जाए तो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है. Total, not only you see, even with the both engine fail, we have an auxiliary power. हाँ, That means that auxiliary power will give the engine a thrust at that time when the both engines are not giving thrust. We have that system on board this aeroplane. हाँ, Okay, incidentally, when 787 was being inducted, a team of Air India which flew down to Seattle and ferry down, I was one of those members of the अच्छा, 787. I was glad for you. Thank you. So we were trained by the Boeing, company, and but the aim of what I'm talking about is that it forgives you in this type of things. Okay, some things are not in your hand. Like for example, such huge vultures really getting together into. But again, any of such big birds, when they get sucked into these engines, you will find black smoke coming from the Correct. engine back. There was nothing seen in that part. Okay, so it's going to be anybody's guess, because the whole world is now thinking what happened. But positively, from the look of it, it was I won't agree with pilot error. I won't. So we are ruling out bird hit. We are ruling out pilot error. No, pilot error. I wouldn't say that I've totally ruled out. The percentage which I personally feel with experience, there were, I think, close to about 10,000 hours of experience between the pilot and the co-pilot, okay, which is quite a vast experience the guys are holding. And to do such a stupid thing that, they got mistaken between undercarriage and flap, because the position of undercarriage and flaps is totally away and it is protected by flap. So you have to move the flap to move the things. So it can't be done just like, for example, I'm talking to you and my hand is going somewhere and the damn switch is gone. क्लच की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया, ऐसी मिस्टेक नहीं हो सकती. ऐसा सर ये इतना लॉन्ग हॉल की एरोप्लेन है तो उसमें तो नेचुरली वो सब सीनियर पायलट्स को ही देंगे. Yeah, there has to be an experience of yours because if you see now this time of the year, it's a monsoons have set in the country. So generally, very experienced people are put in. Now, generally, what is done by the scheduling people, if the commander is highly experienced, then first officer can be with little less. And if the captain who is just released for a few, let's say for a few 100 hours, then they put a first officer who is quite experienced with flying. So this is generally what the balance we keep it in the cockpit. सर हाईटेक बात आपने बता दी, कुछ में कॉमन लोगों की जो बातें हैं, भावनाएं हैं, वो आपको हो सकता है सुनने में बचकानी लगे, लेकिन वो भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ये क्वेश्चंस फ्लोट किए थे कि जनता से बोला था कि आपको मन में क्या जिज्ञासा है, आप बोलें तो हम हमारे एक्सपर्ट से पूछेंगे. तो उनमें से किसी ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने इमरजेंसी गेट उड़ते हुए फ्लाइट में खोल दिया, उसी के चलते हादसा हुआ. ऐसा नहीं हो सकता. Impossible. दूसरा, किसी आदमी ने ये पूछा कि ये जो मिसिंग आउट दैट, सॉरी, हाँ, वो जो थर्ड इंजन जो आप बता रहे हैं तो टर्बाइन आ जाती है, तो उससे वो उड़ क्यों नहीं पाए? नहीं, देखो, आप उड़ने की बात ऐसे है, एक है रिड्यूस थ्रस्ट, एक है टोटल लॉस ऑफ पावर. ये दो अलग चीजें हैं. थ्रस्ट जो रिड्यूस हो सकती है मोमेंटरली, लाइक फॉर एग्जांपल द बर्ड हैज गॉटन. आपको शायद मेरा एक इंसिडेंट मेरे को याद है, वोल्केनिक ऐश का एक इंसिडेंट है. द एयरक्राफ्ट वाज फ्लाइंग एंड ऑल फोर इंजन्स दे सीज्ड, एंड all the four engines, when they seized, the pilot didn't know what happened, because suddenly when he was flying,
and he found that all the engines are shut. Okay, and luck would have it that he was at a quite a high altitude, and by that time he revived all four engines. He realized that he has passed through a volcanic ash. Now that volcanic ash, was sucked in all the four engines, and all here in flying, the altitude matters a lot. If you're at a higher altitude, even if you do something wrong, you can recover the aircraft. But here there's no height. No. By the time that guy, say Jack Robinson, he was going into the ground. सर हमारे दर्शकों में से दो दर्शकों ने, एक है मिस्टर शशिकांत कोठारी, तो एक है गौरव गोयनका, इन्होंने कई क्वेश्चन पूछे। उसमें से एक है उनका कि कैन वी एक्सपेक्ट अ फेयर इंक्वायरी इनटू द मैटर। देखो आगे होता था कि ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज DGCA यूज्ड टू डू एवरीथिंग। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है सिविल में। जब वो रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसने चेक्स एंड बैलेंसेस करने हैं, उसी ने ही इंक्वायरी करनी है, तो देयर यूज्ड टू बी लिटिल फेयर नहीं होंगे वो, क्योंकि आपने रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो गलतियां कर रहे हैं, आपने चेक नहीं किया, और कि आप ही उसकी एक्सीडेंट की इंक्वायरी कर रहे हो, तो आप ब्लेम करोगे अपने आप को। तो नाउ देयर इज अ ब्यूरो ऑफ एक्सीडेंट investigation which does clean job. Apart from that, I must tell you that 3 countries are getting involved in this. United States of America, their FAA, there's all a Federation Aviation Authority. Okay, it's something like DGCA of ours. They are coming in from UK, EASA, European. Okay, and fourthly, the important point, Boeing themselves are getting involved into this, because if this is a technical issue which you find in social media, they're talking about that the person who we call it as a whistleblower. Okay, he's been mentioning a lot of things about the structure were not proper, okay, designing were not proper, they were trying to push the things together, and he mentioned that the aircraft will fall from the sky one by one. Okay, now people are saying this is for the first thing that it has started falling from a sky, so they are also getting involved, the Boeing people also. So I think the other important point which has come in the media is the Home Ministry has ordered under the Home Secretary, okay, independent inquiry. They will not get involved with what has happened. They will get involved because so many people have died on ground, and what many safety factors have been compromised. So in conclusion we can say कि इंक्वायरी तो होगी, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी, and we can rest assured the finding will be unbiased finding. Possibly it should be unbiased, because for example, if so many agencies involved, okay, you give up some sort of a inquiry report which is contrary to other four, possibly nobody going to accept that. And here, by the way, everything has to be done foolproof. One of my friend SS Chahar is a captain from Jet Airways, and he's even now, he's the examiner, simulatory examiner on this. He did the Air India Express. You read that, it is on the web. Okay, they go into nuts and small things. Sathe, he was staying. Captain Sathe also was across the road. Okay, and you used to see him walking, like. And they got into so much depth that in his bag there were, ये जो आपका जो sugar, diabetes का, he was taking medicine, okay, which was not told. That much of depth or into investigations is done. Okay, they won't leave anything. Okay, anything for that matter. Sir, एक छोटा क्वेश्चन और उन्होंने पूछा है, the flight lost its thrust just after seconds of takeover. It could be because of engine failure. Automatically, if there are no thrust, that means the engines are shut. Then can both the engines fail at one go, seconds after thorough inspection done prior to takeoff? As you have mentioned, prior to takeoff, there is a thorough inspection.
फिर एक साथ में दोनों इंजन कैसे फेल हो गए? देखो बात ऐसे है कि आई हैव टोल्ड यू the reasons we are discussing, starting from the beginning, the bird injection, both engines simultaneously at the same time, which is very, very rare. In my entire life, I have heard, I've got more than 40 years in aviation now, plus, okay. Uh, I can count on my fingertips that both the engines failed simultaneously. There are four such cases, all of them, till now, okay. I don't remember any such, because aviation, especially commercial, मिलिट्री में तो भी है, बट कमर्शियल इज सो मीडिया कवर्ड एंड प्लस एनालाइज इन डेप्थ टू लर्न लेसन सो दैट वी डोंट डू द सेम मिस्टेक अगेन इन एविएशन. सर एक इन्होंने और क्वेश्चन पूछा तुषारी जी ने, उसके पहले मेरे को समझ में नहीं आया था, लेकिन आपने एक्सप्लेन किया V1 एंड V2. तो उनका क्वेश्चन है, couldn't the pilot recognize the problem at V1? Let me explain that what is V1. Although I have mentioned to you, V1 is no go, no speed. You see, what we do when we do the training of these pilots, okay, they are theoretically also taught, okay, that when you go on both the engines, okay, somewhere, you don't know when, at least one engine can pack up because of bird, because of any such thing, okay. So if such thing happens, what is your reaction? You're not going to start looking at your notes now. Okay, checklist ki kya karna hai mere ko. It has to it is like your nature or it's such an SOP that even if I wake you up and dream that this is what you're going to do, you should be able to rattle it out. So he will throttle back and abort the takeoff. He will not think twice before the V1. Now I told you that 2 seconds, the human reaction time, and I am giving an example for your audience that the aircraft engine has failed at the V1. It will take 2 seconds for him to react. He's already crossed V1. Actually, what we teach now is if the pilot has seen the V1, okay, speed, and then he realizes the engine is shut, or at that moment the engine shuts, aircraft is to go. You can't stop the aircraft. You have to take off. So means the problem, अगर pilot को realize भी हुई है, तो only after V1 was crossed, not before V1. 100%. If it was before V1, he would have shut the, he would not have gone ahead. It is positively after V1, whatever has happened. The next question is, why the tires were not lifted, although the flight took off and was at 625 feet above the ground? That question is very important and pertinent which you asked. Now, I again mentioned to you that first thing the pilot is supposed to do when he rotate the aeroplane and when he lifted it off is put the undercarriage up. Okay, so he should have done it. तो किसी ने सर एक दूसरे इंटरव्यू में सुना था, उसने बोला कि might be he left it purposely open क्योंकि उसको लग रहा था कि अपन बैंग होने वाले हैं, तो टायर में act as a buffer. You say don't say tires, you say undercarriage. Undercarriage the full, because there's a audio system on, and it takes a lot of impact. Okay, because when you come in for landing, okay, when you change the attitude for landing, the aircraft more or less is dropped from a very, very low height, so that there's a good impact on with the runway and doesn't slip around. So why he didn't do it? That's $1 million question. Okay, everybody is asking why was his undercarriage up. Now I repeat to you, if he realized something happened after V1, now he is tackling the emergency, and when he is tackling the emergency, okay, should he put the undercarriage up at that moment, or now you see when I say mayday, it is 3 seconds gone. Thrust, engine losing power, 5 seconds gone, and aircraft is dropping, another 1-2 seconds gone. Okay, 7-8 seconds is the transmission is going on. The time is clicking.
If you see, from the time the aircraft lifted to the time the fireball was seen, it was just 30 seconds on the clock. तो आप उसमें देख लीजिए कि that the captain has to handle the emergency on the left hand, all these things what are happening, and on the other side, okay, he tell me, if your engines both are not giving thrust, will you like to put the undercarriage after at that time? आपकी पावर ही नहीं है, the aircraft is dropping like a bloody shit. Sir, how critical is the role of air traffic control and pilot communication in preventing or mitigating such disasters? Very important, especially in the military. I mean, we do precision approach landing, and whatever the air traffic controller says, we do it. Okay, that's the way in the military, but in the civil it is not permitted. Okay, we have precision systems like ILS, okay, various other systems which can be utilized, radar, vectoring and all. But in this particular case, okay, ATC can only assist in what is going to be the next, and that was the destruction which you are seeing. The fire tenders, the medical aid services, how fast you can gather maximum at that particular place. And also, you must imagine that there is a full commercial traffic which is there. They are controlling. You can't just say that has happened. Now the other traffic which is flying or coming in for landing, who's going to handle that? So those ATC plays an important role in civil aviation, extremely important. सर, इस दुर्घटना से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं to make the aviation flying experience much more safe for the common people? Arunji, what I have been, whatever media coverage till now I've been with, okay, I say wait for court of inquiry. Look at what are their findings and what are their recommendations. Then only we can speak. At this stage, it will be premature for us to say what lessons we can learn. Because if it was a pilot mistake, then some SOPs will change. Okay, if it is a technical mistake, the designing, then it will be the Boeing company which will be held responsible for the things to do. Or if there is such thing like some administrative issues like during refueling, something has gone wrong or something which they have filled. I don't know what that court of inquiry which is being ordered and which has got a lot of the professionals on board. So we will wait for that. Sir, is there any specific recommendation or suggestion you like to make to the regulator and the airline industry to make the aviation more safe in future? My answer will remain safe. So we have to wait because the regulatory authority and the airline have got specialists. They are paying to those specialists for these jobs only. And we, being in the military and the civil, can only comment at this stage that yes, whether it was preventable or not preventable. If it was preventable, then there are a lot of lessons to learn. But if it was non-preventable, okay, non-preventable, like for example, I told you, okay, if not the bird, ingestion at that stage, which right now we can't see, so it is, unpreventable. So with the depth of knowledge you have, technical and work experience, we can go on and on. But I will not like the interview or podcast to be too long for people who may, some of them may find boring or uninterested or have lack of time to listen to it thoroughly. So in conclusion, I would like to have your view. What, in all probability, in your mind, in your assessment, is the root cause? We are all talking about probability. No one can hold it against you or me. कि आपने ऐसा बोला तो क्यों? We are just talking about theoretical probability in your own mental assessment. You see, my mental assessment says there has to be something wrong, and that can be, I would say, fuel contamination and something to do with
intentionally or intentionally somebody has played with the safety. In this kind of atmosphere all along, this is a very big statement. Yeah. Sabotage, you are indicating towards self-sabotage. No, you see, I remember one thing. When you are with a country which is at, more or less we are one-to-one all the time. Okay. And again, this is my personal view. You have to be very protective. You have to be very secure. You can't apologize and be, say कि यार यहाँ पे my security was compromised somewhere. You can't do that because we have lost close to 300 people now. Okay, and what is the lessons learned? If such thing has happened, because positively, I would like to give an example to your audience regarding, Russia and Ukraine. How Ukraine went and destroyed their bombers in Russia. They used their intelligence. They went with all that things. Technically, they were so, and they were controlling it from Ukraine to get to the Russian bombers. You have read that in the, and you have read Israelis how they attacked Iran. Yes. Okay, they got each and every guy, the scientists, the chief of the armed forces. So if that can be done, why can't And they did all that without sending anyone from Israel to Iran. no. There were a lot of guys. There were a lot of guys who were doing, and otherwise you think I'm talking to you. How anybody knows that you are here? They got the guy where they were, whether you were traveling or whether he was. So insider. So my point is, if you ask my internal feelings, this either done intentionally or intentionally in such, this part need to be looked into, because you have to keep your aerodrome so secure. Okay, somewhere they can tell surely the enemy is looking and they will are at the where to catch the people. Now they've just, if it is a sabotage, I don't say that it's a sabotage, and it is premature to say it is a sabotage. But having said that, I also say take precautions, take security measures, don't let security be compromised, and then be damn sorry about what happened. Yes, sir. With that, we will close our interview. Thank you. Thank you so much for giving us the insight. Yeah. And in conclusion, we have all listened to sir. His views are very clear that no one can say as of now with certainty what was the reason, but at the same time, the needle of suspicion is going through sabotage. And we have to be very careful for future. Thank you, sir. Take care. ग्रुप कैप्टन परमजीत सिंह आहलूवालिया ने हमें हर तरह की इंसाइट दी है, फ्रॉम ह्यूमैनिटेरियन एंगल, फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव, as at the same time, since he is from Air Force, from security angle. Thank you. So we are obliged to you, sir, Thank you for your insight. Thanks a lot, sir. Thank you very much.